यो गाइस नमस्कारम। तो आज हम बात करेंगे लाइफ इज बिल्ट थ्रू लेस थिंग्स। ऑन दी ऑनसेट तो लग रहा होगा कि यार क्या एकदम बकैती वाली बात है, हमारा मन बोलता रहता है। इसकी वीडियोस भी अगर हम फास्ट की देखिए बोलते हैं कि फाड़ते रहो और मतलब अचीव मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। ठीक है, सो आई थिंक थोड़ा थम जाओ। द आइडिया ऑफ दिस वीडियो इज प्रोबेबली रिमूविंग a lot of clutter that exists within our life. अभी पिछली वीडियो में आई वाज टॉकिंग, कल की वीडियो में अबाउट I don't know, like these women dating coaches coming to my feed talking about how one should control their sexual lust and things like that, which is good. But then I see यार आजकल जितना भी आप algorithms और ये सब देखते हैं, it's all designed to just make you go in a direction wherein you're forced to fap. Yeah, you're just forced to release your seed, you know, नीचे का जो भी आपका सीन है. And all of you know that why that guilt comes after you release is because you know that you want to control this. But then the whole ecosystem इस तरह से पूरा बना पड़ा है कि यार नहीं हो रहा सीन ना, वो पूरा कंट्रोल ही नहीं हो रहा. तो I think this video would just talk on that कि यार sometimes all it takes is just a trigger and then your patterns take in effect. तो जितना क्लटर आप हटा सकते हैं ना कि यार फलाने अकाउंट्स जितने भी हम बेकार के फॉलो करें जहाँ पे वी नो कॉन्शियसली इन आवर हार्ट कि यार देयर इज नो प्रैक्टिकल वैल्यू टू दिस, शी जस्ट हैज अ गुड बॉडी और शी इज अ मॉडल, दैट्स व्हाई वी आर फॉलोइंग हर सो दैट वी कैन जस्ट release in the night and things like that, objectify her, yeah, जैसा भी है scene. And then this is the new battle because now it's not a question of getting more resources after a point. It just becomes a question कि inversion thinking कि यार हम क्या नहीं चाहिए. I think in a similar way अगर थोड़ा extrapolate करें इस thinking को कि यार क्या हटाना है लाइफ में, क्या नहीं चाहिए लाइफ में, क्या क्लटर हटाना है, because then the space for truth or the space of the right action would come in your life. तो आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन करना कि क्या फालतू की एप्स गेम्स हमने रख रखी हैं अपने फ़ोन पे. आप कौन से फलाने लोग हमें जो पता है कभी मुश्किल से खड़े भी नहीं होंगे हमारे साथ, उन सबको व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कीपिंग देम. आई थिंक इट्स ऑलवेज जस्ट बेटर टू release people. I see a lot of people on social medias and Instagrams and stuff कि यार चलो जानते हैं नहीं, पता है अंदर कटाक्ष है बट ऊपरी ऊपरी बना के रखेंगे ताकि बुरा ना माने. क्या पता कब फ्यूचर में कौन काम आए. 10 साल हो गए, पहले आप भी वही बात करते थे, सेम आज भी वही है. तो आई थिंक all of us are just experts at lying to both ourselves and others. एंड सब बस एक गेम खेल रहे हैं कि कौन किसका कितना सी बना सकता है. इधर इट्स इन सोशल मीडिया और इट्स इन पर्सनल रिलेशनशिप्स कि बस सब एक दूसरे को गेम करने पे लगे. लाइक देयर इज नो स्पेस फॉर ऑनेस्टी. एंड आई अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस टू इट. क्या ठीक है, अगर आप ऑनेस्ट होके चलो पूरा अच्छे से लगते कई बार जिंदगी में, हैव टू अप्लाई स्ट्रेटजी एंड ऑल ऑफ दैट, दैट्स फाइन. बट आई एम जस्ट टॉकिंग फ्रॉम मोर फ्रॉम एन इंटरनल पर्सपेक्टिव दैट let's say when all of this comes to an end, would you regret your choices, like the time that you spent with those people and जो भी आपका सीन. ठीक है, आई अंडरस्टैंड एक दो बार ऊपरी ऊपरी बना के परे किया, बट देन दिस हैज लाइक बिकम सच ए रिकरिंग पैटर्न कि नहीं नहीं यार मतलब सारा टाइम बस हम ये गेम खेलते रहेंगे. हमें पता है कि इंटरनली कुछ अलाइनमेंट वैल्यूज का कोई कुछ नहीं है, बट हम बस एकदम मतलब लगे रहेंगे. तो दिस इज वेरी वियर्ड. आई थिंक थोड़ा करेज एटलीस्ट अपने इंटरनल सेल्फ में लाना. क्या जितनी डिस्ट्रैक्शन ये सब है सब काटूंगा मैं, ताकि देयर इज जस्ट स्पेस फॉर द राइट थिंग्स दैट मैटर टू मी. And this is how I think one becomes strong, because then
doing the work that you dread so much wouldn't be a challenge because आपने सारी फालतू की distractions हटा दिया जो आपके trigger points है. So I think the new battle is a genuine and authentic life is just built through less, because when you have less in life, you remove all these distractions, clarity descends, and then you know कि यार किस तरफ जाना है. अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे there was this person talking कि यार the way things are right now, I think the future belongs to those people who are very clear in their mind, clear cut action. There's just no other space for bullshit कि यार अभी ये है ये ऐसा. We are just being diverted into two to three thoughts. So I think यही है एक दो perspectives which I wanted to share, that how much lessness can you bring in life, because accumulating more after a point also becomes a sign of your restless ego within. So that also needs to be questioned and just looked at honestly. What is it that really demands or needs more, let's say, expression or accumulation in my own life? So I think ये थी एक दो चीजें which I wanted to share. Let me know what your thoughts are. I think थोड़ा सा philosophical in its way. But anyhow, that would be a small video. Let me know what you feel about this. लिखिए कमेंट सेक्शन में यार क्या कमेंट क्या कुछ किया. And I'll try being consistent with my daily uploads. Earlier, I was, I think, experimenting with a different approach, but now the approach is a little bit different. But anyhow, ये सब important नहीं है. कुछ है वन ऑन वन बात करने लायक, feel free to write an email to me. You'll find it in the about section of my channel का description. It's contact@debukidastak.com. Anyhow, you stay awesome. We'll be back with a lot of awesome podcasts and stuff. And you take care. So until then, this is Devashish Pendra signing off. Cheers.